So if you want to fix your digestion, then please follow what I'm saying. Just eating 2 meals in the window of 8 hours, then not eating for 18 hours, 16 to 18. Everybody is different, but I find this is the most doable thing. And then once a week, or maybe a fast for 36 hours together, meaning 36 hours not eating anything and just being on plain herbal tea. Whenever the hunger is there, you put basil leaf, you put tulsi, you put moringa, you may put people, just few leaves, you tear it, put hot water, let it stay, and then just drink it. No milk, no sugar, no chai patti, nothing. So these type of 4, 5, 6, as many cups you can, because hot water will every time take away your hunger. You have a hunger spike, drink hot water, plain hot water, hunger goes down. Simple as that. Or you can take just a plain glass of water, but it's better to take warm water. If not warm, then maybe room temperature. So if you're drinking lots of water, hot water, herbal tea, that will flush all the toxins out. Right? And when you are not eating whole day, then you have ample time to sit down and meditate, and sit down and read a book, sit down and do your mantra chanting. Please do it. And you will find your mind is so sharp. But if you have food addiction, which most of people have, you will be hankering for food. But if the hankering is too much, too loud, then go out, go for a walk, go for a jog, do asana, do a dance, distract yourself. And our bodies are already storing maybe 100 to 200,000 of calories in adipose tissues, in liver. It's everywhere, right? So when we don't put food from outside, body needs energy, then it takes up the energy which is already stored in form of fat in your body. So without any pain, you get all the gain, because you lose the stored fat. The stored fat which is there in the livers, which is there in the adipose tissue. So it's a great thing, no? To do that. For the microbiome, as simple as that, when you will do the fasting, and when you will do this 16 to 18 hour fasting every day, and when you will eat the fermented foods, again, pre-probiotic is there in your achar. And how many achars do we have? So many. Mango, lemon, turnip, carrot, radish. So many actually. So all these pickles have all the right masalas into that. The fennel, the cumin, the red chili, the rock salt, and the mustard oil. And mustard oil is something which is going to give life, the shelf life to the achar. So our achars don't go bad if they have good amount of oil in that. And oil, a good quality oil, is a great blessing for our body. Are you getting what I'm saying? It's very simple. And if you do it regularly, then I have seen people losing their weight without any effort. I had a man from Bombay. He lost almost 26 kilogram of weight in 2.5 months. It's not a miracle. It was that he was a tall and very bulky man, weight of 130 kg. So he went for first 1 day, then 2 day, and then he went for 8-day water fasting. And second day is a bit tough. Third day he was fine, and he was doing seva, he was working here, and when he weighed himself on the 9th day, he was jumping with joy, because he was not expecting that he would lose so much weight. In total, in 2.5 months, he lost almost 26 kilograms of weight.
So over here, the doctors are here. Of course, the doctor supervise, the doctor keep a check. You can't do a very long fast without a medical supervision. Your doctor should be right there. And all this nonsense which people say, eat 6 meals a day, 5 meals a day, of course not. Now the researchers have come out with great clinical trials and observation of hundreds and hundreds of people who have fasted successfully for 8 to 10 to even 15 days. And what they lost was their diseases, what they lost was the fat, and what they gained was health, and they what experienced was all the health parameters which they uh, were like ticked marked as red in their report, the blood report. When they got the blood report done again, like after a month or two, well, of course, asana and pranayams are there, but fasting was which was doing the greatest trick. And it's something, if you can go, and I can name few doctors. See, I'm not a doctor, so sometimes anybody can always, oh, what does she know? Of course, I know nothing, you know. I know nothing at all. But these doctors know their job, and they have treated thousands of patients. So Dr. Jamna Das, he's called Dr. JD also, a cardiologist, Dr. Jason Fung, a nephrologist, Dr. William Lee, an MD medicine, and the list is huge. So if you go, they have treated thousands of their patients with fasting and with correct diet. And of course, the golden thumb rule is no wheat, no rice, no sugar, no carbonated drinks. They're all out. What is left is nice, green, nutritious, organic, fermented food and good food, good quality food. If your dairy is not within your reach, should I say? Now, see, I have cows over here, and we don't put any injection in our cows, no oxytocin. So this milk is great. But if I go outside, I have a question mark. I won't take milk from an source about which I'm not sure, because a lot of oxytocin are being used by the dairy keepers. Not a good milk to take in. So if you don't have thorough, fresh, organic dairy, then maybe skip the dairy, don't have it. Or you be at a place where you can have an access. But having a good quality of organic milk, curd, lassi, chas. When I say lassi, it's not the sugary one. I am talking about the simple salt, pepper, that lassi, not the sugar one. Because sugar is going to be again a culprit. We don't want that in our system. We already have taken so much. Right? So very simple. What I have said is the most simplest way. You don't have to pay thousands and thousands to a dietitian. If you can understand what I have said and if you follow it, you'll have a good health. Your microbiome would be very nice. And along with that, do your asana properly, do your pranayam properly. Because the alteration of the mind will happen ultimately with yogic sadhana, not just by changing the microbiome, of course, which is very important. Very, very important. आजकल ना मेरे क्या था, ज़्यादा ज्ञान भी अच्छी बात नहीं होती. जैसे आजकल कोई मान लो हमारे लिए खाने को कुछ लाता है, तो हमारा पहला सवाल पूछा जाता है, कहाँ से लाए हो? फिर वो कहता है कि इस जगह से लाए हैं, इस हलवाई से लाए हैं. तो फिर हम कहते हैं उसने किस तेल में तला था? बोले ये तो हमने पूछा नहीं. मैं तो फिर वापस ले जाओ, पहले पूछो उसने किस में, कि अगर वो रिफाइंड तेल में तला है तो हम नहीं खाएंगे. क्योंकि रिफाइंड तेल फिर जहर है. और अच्छा देसी घी ढूंढने से भी नहीं मिलता, बहुत एडल्ट्रेशन हो रखी. वही अच्छा है जो आपने खुद खरीदा है वहां से, जहां आपकी आंख के सामने बना हो. बाकी तो हराम भरोसे चल रहा है सब कुछ.
बहुत सारे टेस्ट हैं, आप गूगल करिए तो वो बता देता है कैसे चेक करो कि देसी घी असली है या नकली है। तो असली घी में हो या असली सरसों के तेल, पाम ऑयल ना हो, असली सरसों हो, रिफाइंड कोई तेल, कोई भी तेल किसी भी ब्रांड का हो, वो अच्छा नहीं है। तो फिर कहते जी ये तो बड़ी मुश्किल है, वो तो इसी में बनाते हैं, अब इतनी चेकिंग कौन करेगा। तो अंततः ये होता है कि फिर हम यहीं आश्रम में बनवाते हैं, जो भी खाना हो फिर यहीं बनेगा, क्योंकि आपका नियंत्रण तो है ना उसके ऊपर। अभी कल ही कोई मुझे मिले, कैंसर, एक और उनके परिवार में कैंसर, 2 उनके घर में मौतें हुई कैंसर से। तो उन्होंने मुझे पूछा इतना कैंसर क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि हम जहरीला खाना खा रहे हैं, जहरीला खाना। हमें एक किसी प्रेमी ने, उनकी जगह थी, उन्होंने कहा कि आप आश्रम की आवश्यकता जो अनाज की हो वो यहाँ उगवाइए। तो मैं अपने शिष्यों की ड्यूटी लगाई कि भाई पहले ना सॉइल टेस्ट कराओ, मिट्टी को टेस्ट कराओ। मिट्टी के टेस्ट की जब रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो हम सोच में पड़ गए। मैंने कहा जिस मिट्टी में सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें उगाया हुआ कोई भी अन्न जहर नहीं होगा तो और क्या होगा। अब ये एक 25-30 एकड़ का मतलब ज़मीन है ये, और उसमें हर हिस्से की उन्होंने मिट्टी की जांच कराई। उसमें पानी 700 फीट नीचे, यहीं हरियाणा में 700 फीट नीचे है। और इन्होंने, जब तक ये इनको समझ नहीं आई थी तो इस खेत में वो लोग चावल उगा रहे थे। तो मैंने कहा ये भगवान, जिस खेत में पानी 700 फीट नीचे है वहाँ पर चावल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगना है, तो मतलब हम लोग अपनी ज़मीनों को रेगिस्तान बनाने पे तुल गए। 700 फीट पानी। और साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें 2 हिस्से जो थे लैंड के, बोले इन 2 हिस्सों में तो अभी आप भूल जाइए कि कुछ उगाना है। इसको अगर ठीक करना है तो कम से कम 5 इंच तक पक्की खाद इसमें पड़े, साफ मिट्टी इसमें पड़े, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, और कुछ ऐसा सामान लगाया जाए जिसमें बाहर से पानी की भी ज़रूरत नहीं है और ज़मीन से भी पानी की ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ना हो। तो वो चीज़ें बची क्या? मिलेट। बाकी अभी वो रिपोर्ट देंगे तो हम उसको सोच रहे हैं कि कैसे उस ज़मीन को हम ठीक कराएंगे। अब यहाँ पर भी आश्रम में भी हम लोग बराबर इस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं कि मिट्टी को कैसे ठीक करें, पानी को कैसे ठीक करें। इसीलिए 3 मियावाकी फॉरेस्ट लगाए, लगभग 900 पेड़ लगाए हैं यहाँ आश्रम में। 900 पेड़। जो पेड़ 10 साल में, 12 साल में 12-15 फीट ऊंचा होता है, वो मियावाकी फॉरेस्ट में मात्र 4-4.5 साल में वो 16-18 फीट ऊंचे हो गए। सारे पेड़ ऊंचे हो गए। उन पेड़ों की वजह से पक्षी ज्यादा हो गए। अब तुम्हें मैं बताऊं, आजकल रोज सुबह हमें मोर और मोरनी अपनी आवाजों से जगाते। 3:45 बजे उनकी पुकार आ जाती, फिर तोतों की आवाज आती, फिर कम से कम नहीं तो 65 किस्म के पक्षी जो है वो कुल मिलाकर के आश्रम में हैं। और अब ये जो बर्ड्स का पूप होता है, जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग होती है, जिस मिट्टी में गिरती है, उस मिट्टी को वो और जरखेज बना देते, उसको और उसका उर्वरा शक्ति और ज़्यादा बढ़ा देती, जिससे मिट्टी के अंदर बहुत नए नए प्रकार के जो कीड़े हैं वो भी जन्म लेने लग जाते हैं, जो हमारी फसलों को और अच्छे पड़ते हैं।
बेस्ट ज़मीन कौन सी होती कि अगर आप उसमें 2 फीट 1.5 फीट खोदें और नीचे तुम्हें केंचुए मिल जाए। तो अगर मिट्टी में केंचुए नहीं हैं तो जानिए वो मिट्टी तो मर चुकी है बिल्कुल। और पेस्टिसाइड डाल डाल के, जहर डाल डाल के अफसोस है हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि वो 2 ही फसल उगाते ज्यादा करके, एक गेहूं एक चावल। सब्जी वाले इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, अब वही हम लोग खा रहे हैं सब। गेहूं चावल चीनी, अब चीनी के लिए मतलब गन्ने का कभी खेत देखा हो तो साल भर वो पानी में फसल खड़ी रहती और उसमें कुछ 14-15 पेस्टिसाइड हैं जो साल भर में उसमें डलते रहते। तो आप चीनी खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? सब्जी खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? चावल खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? मतलब मेरा सुझाव है, जिन लोगों की भी खेती है, जहां पर भी आप देश में हैं, अपने खेत की मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराइए। पता लग जाएगा कि उसमें कितना पेस्टिसाइड, डीपीए, एक समय तक तो डीडीटी भी पड़ती रही है। यूरोप में बहुत सारे केमिकल जो बैन हो चुके हैं, भारत में आज भी वो यूज हो रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती, क्यों? हम लोग यहाँ आश्रम में सारी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गौमूत्र और को मिला करके उससे एक हम जीवामृत बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जितनी फसल होती है या फल होते हैं, चीकू है, आम है, जामुन है, अमरूद है, नींबू है, बेल है, इस समय बेल ही बेल हुआ पड़ा है, कुछ नहीं डालते उस, वही जीवामृत डालते हैं और फसल भी अच्छी है, कीड़ा भी कोई नहीं है।